Hello, Chandraprabha Mishra. Hello, everyone, and a very, very good evening to all of you. And I welcome all of you to the Unacademy Legal World. Guys, in today's session, I would be discussing with you some of the most important judgments, some judgments which have actually helped in shaping the entire constitution of India. It has helped us understanding the laws of India. It has helped us understand the judicial system and so much more. This session in this series, the series that I started with you this month, we would be doing 4 sessions on important judgments. I would be doing with you somewhere around 20 important judgments that have actually shaped the Indian, that have actually shaped India. Now, the important topics that I'm going to be discussing with you in today's class is going to be number one, the Romesh Thapar versus State of Madras 1950 case. I'll be discussing with you the State of Madras versus Srimati Champakam Durairajan case, the KM Nanavati versus the State of Maharashtra case, the Berubari Union versus the Unknown in 1960 case. A good evening, all of you. Chandraprabha, Gautami, Himansh, Nancy, Krish, everyone. Bache log, good evening to all of you. There's a request to all of you. Please make sure that you guys like the session. Jitna ho sake session ko like kariye and make sure that you share it with your friends. This is going to be one of the most interesting sessions that you get. Acha, by the way, I'll be telling you about this. So, sabse pehle number one, what we have planned is this month is that I'll be doing the most important judgments with you, some of the most important ones which have shaped the Indian history, and I will be doing special sessions for CLAT 2023, the most important landmark judgments in 2023, and I'm going to be doing it on the Unacademy CLAT channel, so you can stay tuned for the same. That will help you in doing a 360-degree coverage of the entire syllabus. All right, so the very first topic that we would pick up is number one, the Ramesh Thapar versus State of Madras case. I'll be giving you a short gist of how these cases work, what are the important pointers of this case, what was the background, so that when you actually read it, you can understand the details about it. Okay? Now, if you remember, the Ramesh Thapar versus State of Madras case was the very first case in India which actually addressed the rights of a free press. It spoke about the rights of a free press. The press was sometimes referred to as the fourth estate, and this is because of the independence that the press is able to bring to the attention of the general public the faults of those in position and power for good reason. Now, just try to understand, this is a case which happened in 1950. People of India were illiterate. A large population was illiterate. A very small population of people were educated, and most of them were lawyers and politicians. Most of the people did not even understand what was happening to them. So B.R. Ambedkar, in Article 19 subclause 1, had given us an implicit freedom of speech and expression. The freedom of speech and expression implicitly gave us the power of the press. That means directly तो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन indirectly ये imply कर दिया था कि freedom of press तो होगा, because you will have the right of basically having your freedom of speech and expression through words, through writing, through printing, through lithography, absolutely anything. So if you understand, directly freedom of press हमारे constitution में indirectly लिखा हुआ है कि freedom of press तो होगा ही होगा. Now at that point of time, if you understand the background, the petitioner, the person who had registered the case, was the printer, the publisher, and the editor of a Bombay-based English periodical which was known as The Crossroads. ये दिख रहा होगा आपको? Just a second, guys. Just give me a second, guys. My screen has frozen. You just need to give me a second. Good evening, Arohi. Good evening, Priyanka Biswas. Just give me a second, everyone.
Okay, now it's fine. Just give me a second. I'm opening the page. All right. So if you see, the person who had actually done the particular, who was the petitioner, was the editor, the publisher, and the printer of Crossroads. And Crossroads was nothing but an English-based language periodical. Now, what had happened is, in the state of Madras, the erstwhile state of Madras, under the section 91A of the Madras Maintenance of Public Order Act, any entry, any dissemination of the newspaper was completely prohibited. That means nobody could put in any type of dissemination in the newspaper. However, the Madras government at that point of time had actually stopped the printing of this newspaper. The petitioner went forward and said that, sir, my fundamental right has been violated. My fundamental right is mentioned in Article 19 of the Constitution. I have been given the freedom of speech and expression. And in the Constitution of India, the freedom of speech and expression, you have an implicit freedom of the press. The freedom of the press, the state is trying to take it away. Now, in this particular case, the state, on the other hand, the respondent, had basically said that is not our fault. ये हमारी गलती नहीं है. Everything, as you all know, the fundamental rights in India is not absolute in nature. That means, in the name of freedom of press, they are subject to rights. They are subject to grounds of reasonable restriction. Now, you cannot have your freedom of speech and press. You cannot incite violence. You cannot be someone who is inciting the people and you can say that, it is my freedom, मैं ऐसा करूँगी. State ने बोला कि सर Article 19 subclause 2 भी तो है. And under 19 subclause 2, there is rights of reasonable restriction. Under that, we are saying that the printing of this newspaper is going to affect public safety. It's going to affect public order. And that is a subject of state security. इस बैकग्राउंड में उन्होंने डायरेक्टली बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सीधा सा स्टेटमेंट दिया. सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस केस, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली एक बात बोली. एक सिंपल सी चीज है. कोर्ट ने बोला कि सी यू कैन गो टू हाई कोर्ट, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू हैव योर रिट पिटिशन, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल योर फंडामेंटल राइट्स आर बेस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. उन्होंने डायरेक्टली बोला दैट द ऑर्डर was clearly in violation of Article 19 subclause 1A. ठीक है. मगर जब आप इसको ध्यान से देखते हो तो उन्होंने डायरेक्टली ये बात बोली कि we cannot actually stop it. Peace and quiet is a very important thing. That is the reason that in this case is one of the landmark cases when we talk about the rights of free press. ये पहली वाली है. The second case that we are going to talk about is the Champakam Dorairajan versus the state of Madras case. अब ये केस आप लोगों को याद होगा फ्रॉम द टाइम जब हम रिजर्वेशन का टॉपिक कर रहे थे. रिजर्वेशन हैज बीन वेरी मच इन द न्यूज इन द लास्ट फ्यू डेज एंड इन फैक्ट इट इज अ वेरी वेरी डिबेटेड टॉपिक्स अमंगस्ट ऑल द पीपल जो इसके बारे बात भी करते हैं. जैसे कि रिजर्वेशन आपको याद होगा इनिशियली सिर्फ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जाता था, राइट. धीरे धीरे वो ओबीसीज की तरफ भी आने लगा एंड नाउ अ वेरी न्यू क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन हैज कम फॉरवर्ड दिस ईयर विच इज नोन एज द EWS, द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. इस बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. अब ये एक रिविजन सा समझ लीजिए. दोज ऑफ यू ऑलरेडी स्टडीड विद मी इन द प्रीवियस क्लासेस, इसको एक रिविजन सा समझ लीजिए. बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ऑन एंड ऑफ दिखता रहेगा. रिजर्वेशन को लेके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कभी कभी हमारे सामने आते हैं और बहुत बार हम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन आज इसको समझने की कोशिश करते हैं. एग्जैक्टली आरोही. गाइस सी, नंबर 1, ऑल ऑफ यू नो दिस वन थिंग कि reservation was a very debated topic in the older times, right? हमारे constitution में there is what we call Article 46 of the Constitution. Article 46 of the Constitution, it is a part of Part 4. That means it is a directive principle of state policy. ये state को वो guidelines है. The directive principles of state policy are those guidelines जिसको follow करके state जो है या हमारी government जो है वो laws बनाती है. मैम ये जो लॉज बनते हैं, ये लॉज जो है, क्या ये डीपीएसपी इन लॉज को बनाने के लिए बाइंडिंग इन नेचर है? एब्सोल्युटली. हमारे आर्टिकल 36, आर्टिकल 37 मेक्स ऑल दीज लॉज बाइंडिंग ऑन द स्टेट. मतलब स्टेट कुछ भी करेगा, दे विल हैव टू कंसिडर व्हाट इज रिटन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स.
अब मेरे भाई आर्टिकल 46 में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, दैट द स्टेट shall take certain steps for the promotion of SCs, the promotion of STs, and the promotion of other backward classes. पूरा वहां पे डायरेक्टली लिखा है. फर्स्ट थिंग, now what happened is in 1950 का वक्त था, and there was a lady by the name of चंपकम दोराई राजन, right? तो वो मद्रास मेडिकल कॉलेज में शी वांटेड एडमिशन ओवर देयर. तो शी बेसिकली वेंट टू दैट कॉलेज एंड उन्होंने जाकर देखा कि कुछ सीट्स खाली थे. ठीक है, तो लेडी जाकर शी वेंट एंड सेड कि मुझे ये सीट दे दो, सीट तो खाली बैठी है, व्हाई आरंट यू गिविंग मी द सीट. तो मद्रास मेडिकल कॉलेज ने बोला कि व्हाई डू यू वांट द सीट राइट नाउ. देखिए ये सीट ना रिजर्व्ड रखे हुए हैं. तो उन्होंने बोला रिजर्व्ड ऑन बेसिस ऑफ व्हाट. बोला रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. देयर इज समथिंग कॉल्ड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन. ये जो रिजर्वेशन हमने करा है, दिस इज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन. अब चंपकम दोराई राजन, शी गॉट वेरी एंग्री. शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट and she also gave a writ jurisdiction over there, a writ petition. She said ki sir, in article 15 she said that sir, in article 15 you have said that nobody should discriminate against me on the basis of my caste, my religion, my sex, and my caste as well. Sir, in that case, race, religion, caste, sex, place of birth. But sir, on the basis of my caste, मेरे साथ यहाँ पे discrimination हो रहा है. Discrimination is happening with me on the basis of my caste. I am not being given a seat, and Article 15 of mine is getting completely violated. Supreme Court ने बोला you are absolutely correct. Article 15 ने बोला है that there shall be no discrimination. तो भाई किस ground पे जो है वो change कर रही है. मद्रास मेडिकल कॉलेज ने बोला कि सर मैं क्या करूं, आप लोगों ने ही तो आर्टिकल 46 में बोला है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आप लोग रिजर्वेशन दे. हाउ इज इट माय फॉल्ट. दिस वाज द फर्स्ट डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन. चंपकम दोराई राजन केस के बाद, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट इंडिया में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था. एंड इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 डाला गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हाँ भाई, अगर हम लोग वी कैन गिव रिजर्वेशंस टू एससीज, हम एसटीज, ओबीसीज, हम सबको बेसिकली एससी एसटीज को एंड ओबीसीज को हम रिजर्वेशन जरूर देंगे. दिस वाज द फर्स्ट टाइम गाइज दैट इफ यू नो. एंड हाँ, बाय द वे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स. ऑलमोस्ट 15 साल तक ये चीज चलती गई, राइट अप टिल द कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार and the Sajjan Singh versus state of Rajasthan case. दोनों केस में court had confirmed the prevalence of the DPSP over the fundamental rights. ठीक है, I hope ये वाला टॉपिक absolutely clear है आप लोगों को. Now in the future हम ये सारे केसेस भी हम डिस्कस करेंगे. द गोलकनाथ केस 1967, द केस ऑफ नंदा भारती केस, वी विल टॉक अबाउट मिनरल मिल्स केस, बट दैट विल कम इन द अपकमिंग क्लासेस. वी विल यूज द स्लाइड्स ओवर देयर ऑल्सो. अब जिन्होंने मेरा बेसिक स्ट्रक्चर का क्लास करा है, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि ये टॉपिक हमने पहले भी करा है, एंड दिस शुड जस्ट बी अ रिविजन फॉर यू विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट. चलिए गाइज, इज इट क्लियर? अभी तक सबको क्लियर है या कोई डाउट है? टेल मी. Okay, so if you see, this case was an issue between fundamental rights and directive principles. Champakam Dorai Rajan was a Tamil woman from Madras. Because of the communal government order, there was caste-based reservation in government positions and college seats. She was denied admission into a medical college in 1951. The point of contention was between Article 16, subclause 2 of the Constitution and Article 56 as well. Article 46 as well. Okay, no doubt. चलो बढ़िया. अगला टॉपिक करते हैं. The next topic that we would take up today is the K.M. Nanavati versus the state of Maharashtra case. How many of you have seen the movie Rustam? How many of you have seen this movie Rustam? ये बताइए, कितने लोगों ने रुस्तम वाला केस देखा है?
हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट? कम ऑन क्विकली. वो देखा है जिसमें बेसिकली अक्षय कुमार होते हैं. 4, आरोही 4. या वी आर डूइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आरोही, रुस्तम वाला केस देखा है? You must have definitely seen Akshay Kumar wearing that, that beautiful navy ka uniform, and obviously with him his beautiful wife Ileana De Cruz. Exactly. KM Nanavati is the similar case. हाँ, grave and sudden provocation. बहुत अच्छे आरोही वर्मा. ये मूवी अगर आपने देखा है तो you have already seen the case of KM Nanavati. It was the last case in India जिसमें jury का use किया गया था. बट लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट डिटेल अबाउट इट. कि एक बहुत ही इनफेमस केस था KM नानावती जी का. ठीक है. नाउ KM नानावती जी, ही वॉज बेसिकली अ नेवल कमांडर. ठीक है. ही वॉज अ नेवल कमांडर एंड ही हैड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वाइफ. उनकी वाइफ जो थी, शी वॉज एन इंग्लिश बॉर्न लेडी एंड शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. इनके वाइफ के एंड दे हैड 3 चिल्ड्रन टुगेदर. ठीक है. दे हैड 3 चिल्ड्रन टुगेदर. नाउ एज ऑल ऑफ यू नो, नेवल ऑफिसर्स या जो नेवल कमांडर्स होते हैं उनकी जॉब काफ़ी टफ होती है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ देयर जॉब एक्सटिजेंसीज they basically have to stay in different places. They had to stay in different places at different point of time. ठीक है. Now अच्छा, by the way, he was also Parsi. He was a Parsi and his wife's name was Sylvia. Again it started. 1 second guys. Okay. And his name was Sylvia. His wife's name was Sylvia. I'm so sorry. Now, she was a very beautiful lady, very, very beautiful, just as she has been depicted in the movie. Now, he had 2 sons and he had a daughter. Now, what happened is that when Nanavati was away, Sylvia fell in love with a person by the name of Prem Bhagwan Ahuja. या प्रेम आहूजा करके भी आप याद कर सकते हो. प्रेम भगवान आहूजा. Prem Bhagwan Ahuja was a Sindhi friend of Akshay. ठीक है. He was a Sindhi friend of Nanavati. Now, when he came back, she got involved with him, and basically, when her husband came back, she told her husband about her affair with Ahuja. Now, according to what Nanavati said in court, he went to Prem and he asked him, "Are you intending to marry Ahuja? Are you intending to marry my wife?" Prem Ahuja said, "I do not have any interest," and he actually answered in the negative way. Due to this, Nanavati took out his service revolver and he actually shot Prem Ahuja 3 shots. He fired 3 shots at him and Prem Ahuja obviously dropped it. आपको वो राम जेठमलानी जी याद है? Do you remember the name of राम जेठमलानी? भाई काफ़ी फेमस लॉयर है हमारे. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं who aspire to be something like him. ये उनका ये पहला केस था. राम जेठमलानी का ये पहला केस था. प्रेम आहूजा की जो सिस्टर थी, उन्होंने राम जेठमलानी जी और एक पूरा लीगल टीम बनाया था. इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस कि आप देखोगे राम जेठमलानी जी गॉट his stronghold in Mumbai. I don't know if you know this, but he got his stronghold in Mumbai at that point of time. अब इस केस में क्या हुआ, नानावती जी को चार्ज किया गया फॉर द मर्डर ऑफ प्रेम आहूजा. इनिशियली ज्यूरी ने उनको नॉन गिल्टी डिक्लेयर करा एंड उनको फिर रीट्राई किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट से डिसमिस होने के बाद. इन 1960 नानावती वॉज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ आहूजा एंड ही वॉज गिवन लाइफ इन प्रिजन. सेंटेंस ने बॉम्बे गवर्नर ने उसको कुछ घंटों में ही उसको सस्पेंड कर दिया. आफ्टर दैट इफ यू नो ही बेसिकली मूव टू कैनेडा एंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही एक्चुअली स्पेंट ओवर देयर ओनली. उनको पार्डन किया गया था. उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित, द बॉम्बे गवर्नर, शी हैड बेसिकली पार्डन हिम. इस इंसिडेंट को, दिस पार्डन दैट ही गॉट, द फैक्ट कि पहली बार जूरी ने उनको नहीं करा, ही वॉज रीट्राइड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उनको गवर्नर ने पूरी तरीके से छोड़ दिया. ये बहुत बड़ी केस हो गई. पार्डन मिलने के बाद नानावती ही इमिग्रेटेड टू कैनेडा अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड हिज 3 चिल्ड्रन. एंड बहुत रिसेंटली 2003 में नानावती जी की जो है वो डेथ हो गई थी. ठीक है. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है. यस बिकॉज ऑफ हिज बहुत सारे पॉइंटर्स हैं. सी वी जस्ट नीड टू रिमेंबर इट. जिसको नहीं ये केस के बारे में पता ना, वो एक बार रुस्तम मूवी देख लो. बहुत ही, if I'll tell you quite accurately, they have covered a very large part of it. They have very accurately covered a very large part of this case. है ना. चलो, the last part
is the Berubari Union versus Unknown of 1960 case. Okay, so let me give you a little bit of gist about this particular topic. Let me give you a gist about it. थोड़ा background बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा connection इसका बना पाओ. ठीक है? So ये जो केस था, this asked many important questions. अब अगर आपको पता है, बेरूबारी वॉज अ पर्टिकुलर टेरिटरी जिसको ट्रांसफर कर दिया गया था पाकिस्तान को. ठीक है, बेरूबारी जो एरिया था वो एक छोटा सा पावर चीज था, एक छोटा सा एरिया था जो सॉल्व कर दिया गया, वो दे दिया गया था पाकिस्तान को. Now, in the backdrop of this, very important questions were asked. Number one, what is the power of the parliament to transfer territory? ये power of parliament क्या है टेरिटरी ट्रांसफर करने के लिए? What is the power of the parliament? Question number one. पहला सवाल तो यही हो गया कि पार्लियामेंट को क्या पावर है टू ट्रांसफर टेरिटरी. क्या वो हमारा टेरिटरी उठा के भी किसी और को दे सकता है? देखिए, ये जो डिसएग्रीमेंट्स हुए थे ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये काफी दिनों से हो रहे थे. You all know India and Pakistan were divided as per the Ratcliffe line. And if you remember the story of Sir Ratcliffe, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे while drawing the lines. So he had basically just taken up the map and arbitrarily drawn a line between India and Pakistan. This Ratcliffe line, because of the arbitrariness of the Ratcliffe line, there were multiple disputes which happened at that point of time. And one such dispute was the dispute of the Berubari. ठीक है? बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था द जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, द जलपाईगुड़ी. जलपाईगुड़ी उस टाइम पे जब डिवाइड हुआ था तो उसमें एक थाना आता था जिसका नाम था बेरूबारी, एंड इट वाज नोन एज द बेरूबारी यूनियन नंबर 12. द बेरूबारी यूनियन नंबर 12. नाउ ये जलपाईगुड़ी थाना के अंदर था. नाउ ऑब्वियसली अगर आपको पता है उस प्रॉब्लम की वजह से उसके बाद ये इशू यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता रहा क्योंकि एरिया हमारा था, जुरिडिक्शन हमारा था एंड जगह उनके अंडर आ रहा था. तो एक नेहरू नून अग्रीमेंट हुआ था 1958 में. नेहरू नून अग्रीमेंट ऑफ 1958 हैड हैपेंड, जिसमें बेरूबारी यूनियन नंबर 12 का आधा जो है वो पाकिस्तान को उठा के दे दिया गया था, आधा जो है हमने इंडिया की तरफ रख लिया था. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये पार्लियामेंट का पावर था कि ये एक टेरिटरी उठा के पाकिस्तान को दे रहा था. सो दिस केस मेड अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू ट्रांसफर टेरिटरी टू another place. Number one. Number two, Supreme Court had held that the Parliament of India is not competent to make a law under Article 3 for the implementation of the Nehru Noon Agreement. तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पे जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच. इसके बाद अगर आपको पता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड ओवर हियर इज व्हाट इज द पावर ऑफ द प्रियम्बल. अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल देयर आर जनरल पर्पसेस बिहाइंड सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज अ माइंड टू द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत लोगों ने बोला कि हर आर्टिकल में बहुत सारे टर्म्स जो है एम्बिगुअस है एंड देयर आर मोर देन वन मीनिंग. सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू अबाउट इट? In this case, the Supreme Court made a very simple hearing. हाँ. तो उन्होंने एक बहुत सिंपल चीज की कि देखो, द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसीलिए द प्रियम्बल इज नॉट जस्टिशिएबल. प्लीज डू नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट by talking about the summary of the book. Whenever there is a summary, remember, it will not be completely correct. completely correct नहीं होगा, वो completely पूरा ethos नहीं दिखाएगा. हाँ, कोशिश बेस्ट होगी कि उस समरी के बीच उस बुक का सारा रोमांच दिखाया जाए, बट रियलिटी में नहीं होता. That is why the Berubari case was considered to be one case which signified to us that the preamble was not a part of the Constitution of India. Now guys, these are the 4 very important cases and I made a list of that. अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ. Your homework is going to be the Kedarnath versus State of Bihar case. I want you all to learn a little bit about it and in the next class we will obviously do a discussion. बट ये छोटा सा एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ because this is one of the most important landmark case. तो इसको थोड़ा सा